ओके, आई टेल ए शॉर्टकट्स टू अंडरस्टैंड वे में। इनिशियली वो थोड़ा शॉर्टकट्स अंडरस्टैंड करो, बाद में धीरे 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 आपको ये आ जाएगा। ओके, चलो। सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली अगर रेडियस है तो एम आर स्क्वेयर आएगा बेसिकली, एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ में एम एल स्क्वेयर इज अ बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस है तो रेडियस एम आर स्क्वेयर में आएगा, उसी को आपको कोएफिशिएंट डालेगा ना, 2/3 2/5, ये एम आर स्क्वेयर तो फिक्स है इन रेडियस में, राइट। एंड सिमिलरली लेंथ में रॉड वगैरह में एम एल स्क्वेयर आएगा, इसके बाद जो में बाई 12 करेगा, बाई 3 करेगा, एम एल स्क्वेयर बाई 3 करेगा, इसी को कोएफिशिएंट्स को विल दे विल चेंज बट रिमेनिंग ऑल सेम, राइट। सो आई विल टेल यू शॉर्टकट हाउ टू रिमेंबर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी आ जाएगा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोस्ट ऑफ द थिंग आ जाएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर लर्निंग अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर लर्निंग, राइट। ओके, रिंग का विल टेक, रिंग का moment of inertia about center of mass which is passing perpendicular ring का, so formula क्या है? mr square by 2 mr square. हाँ, mr square is a moment of inertia of the ring. so ये भूल जाएगा ना नॉर्मली। so आपको क्या करने का, ये याद रखने के लिए लिसन करो, मानो आपको ये mr square याद रखने के लिए यू वेयर ए रिंग, उसके ऊपर mr square बोल के लिखो। सुबह सुबह उठ के ऑलवेज देखो mr square mr square mr square mr square, बाद में निकाल दिया तो भी आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr square याद आएगा। आ गया? रिमेंबर, राइट? ओके, नाउ इफ इट इज अ रिंग आई विल गो फॉर ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, देखो टॉप व्यू में से विच शेप इट इज लुकिंग लाइक, इन टॉप व्यू में से विच शेप इट इज लुकिंग लाइक? रिंग। तो इसका भी हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? mr स्क्वायर। आ गया? दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट विल गो फॉर ए डिस्क। डिस्क में पूरा सॉलिड है ना, ए डिस्क सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला चाहिए। डिस्क मीन्स आपको क्या है, डीएनएस का मीनिंग क्या है? डिवाइड विथ ए स्मॉलेस्ट नंबर, डिवाइड विथ ए स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, डिस्क मीन्स डिवाइड विथ स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब क्या है? एम आर स्क्वेयर, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑलरेडी 1 तो है, 1 तो नहीं कर, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, सो एम आर स्क्वेयर बाय 2 इज आंसर, डिवाइड विथ स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, याद रखने के लिए बोल रहा हूं, बाद में याद होने के बाद ये नॉर्मली हो जाएगा। एम आर स्क्वेयर बाय 2 इज अ डिस्क, राइट। नाउ समझ में आया? मानो एम डिवाइड विथ द स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एम आर स्क्वेयर बाय। yeah sir understood okay, now if I disk means we are going for a solid cylinder. now tell me, solid cylinder top view में से आपको looking like a disk only, yes. and this also mr square by 2। देखो 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, mr square by 2, 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आ गया। ओके, नेक्स्ट विल गो फॉर ए स्पीयर का। now we'll go for a spear, spear का solid spear we're going, right? Spear, okay, moment of inertia about the spear। okay, इसका क्या है देखो, ये इसको देखो शॉर्टकट लेंगे, स्पीयर का, सॉलिड स्पीयर का, इसको थोड़ा घुमाए तो 2 आएगा, इट लुक लाइक 2, एंड P is for what? Punch, punch, so it is 2/5 mr square। okay, 2/5 mr square, इसको थोड़ा घुमाए तो 2 आएगा, एंड P is for punch, 2/5 mr square। सॉलिड स्पीयर आ गया ना? ओके, चलो। नाउ शेल में देखो, हॉलो स्पीयर विल लिखो, एम्प्टी है ना। हॉलो स्पीयर का अदर नाम क्या है? हॉलो स्पीयर का अदर नेम इज व्हाट? शेल। ओके, ये शेल है हॉलो स्पीयर का। देखो ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? एस को घुमाए तो कौन सा शेप, कौन सा नंबर आएगा? एस को थोड़ा घुमाए तो 2,
एंड ई को घुमाए तो 3. 3, सो 2/3 mr स्क्वायर। याद दिलाने के बोल रहा हूँ, 2/3 mr स्क्वायर आ गया ना, अभी तो इतना तक आ गया ना। Yeah. ओके, नो रॉड का इसमें लेंथ में आएगा ना, इन टर्म्स ऑफ लेंथ में आएगा, मैं बीच में से कट करूंगा। आई वॉन्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। ओके, सो इसका क्या आएगा, देखो रॉड को इफ आई कट दिस आर सिंबल को कट करूंगा, इफ आई डिवाइड विच नंबर इज कमिंग, आर को डिवाइड किया तो 1 and 2 आ रहा है ना, Yeah. मेरे आर को कट किया तो इधर इज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो दैट्स व्हाई ml²/12। किसी समझ में आ रहा है? ऐसे ही याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, ml²/12। ओके, So नाउ but so but oh never mind, never mind. ओके, नाउ सेम रॉड को अगर कॉर्नर से मैं घुमा रहा हूं, ओके, देन क्या होगा, रॉड को बीच में से कट किया तो 1 2 आ रहे हैं, सिंस आई एम पुटिंग इन द कॉर्नर में, आपको कट नहीं कर रहे ना, ये दोनों ऐड करो, 1 + 2 is 3, सो इट इज ml²/3 आ गया ना, बीच कॉर्नर में ml²/3। दिस ऑल थिंग्स आपको इनिशियली याद रखने के लिए, देन बाद में इजी हो जाएगा आपको। ये आएगा तो ही आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बोल के बोलने का, नहीं तो नहीं आएगा, कभी भी एक क्वेश्चन भी नहीं हिलेगा। ओके, चलो, दिस ऑल थिंग्स। एंड दूसरा आपको मालूम पड़ने का, हाँ वो वाला याद है, बड़ा वाला कौन सा, सॉलिड सिलेंडर से बीच में कट किया तो, Yeah. टेल मी। mr²/2 plus ml²/3. नो, mr²/4 प्लस, टेल मी, Oh that oh sir, you should tell for solid or hollow. No. सॉलिड ओनली, सॉलिड, ml²/4 plus ml²/12. यस, ऐसा कट किया तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दूसरा एक इंपॉर्टेंट है आपको ट्राइंगल का भी लिखने का। ओके, ट्राइंगल का भी लिखने का, सपोज मान लो दिस इज अ ट्राइंगल ऑफ दिस इज अ बेस, ए हाइट है। ओके, इसके अबाउट आई एम रोटेटिंग लाइक दिस, इसके अबाउट ए बेस के अबाउट आई एम रोटेटिंग, जूम 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 बोल के, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mh²/6, ये भी लिख लो, mh²/6 इज द ट्राइंगल का शेप है, ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²/6। Yes, sir, understood. हाँ, Sir, wait. So there's no base for moment of inertia in this. नहीं, इसके अबाउट, बेस के अबाउट ओनली वी आर रोटेटिंग, एट दैट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mh²/6 इज द फॉर्मूला। Okay. नाउ इसका मुझे फार्मूला चाहिए, एंड दूसरा रेक्टेंगल याद है ना, रेक्टेंगल तो बहुत इजी है ना, अगर मैं लेंथ को कट करूंगा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लेंथ वाइज, चल में आई इज इक्वल टू, याद है, अबाउट लेंथ वाइज में कट किया तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, ml². नो, अगेन By 2. ब्रेड्थ में, ml²/12. हाँ, ml²/12 विल बी द लेंथ को कट किया तो, आई वाई वाई में मान लो, आई वाई इज ml²/12, अगर ब्रेड्थ में कट किया तो x में, आई एक्स विल बी mb²/12. mb²/12। सो जो लेंथ, लेंथ को कट किया तो लेंथ वाइज डालने का, ब्रेड्थ को कट किया तो ब्रेड्थ वाइज डालने का, दैट इज आंसर। ओके, नाउ आई लास्ट द फॉर्मूलास बाय करो, So 1 second. आंसर दे वाला, Yeah. हाँ, नो बाय हार्ट द फॉर्मूलास।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल अपलोड एंड विल पुट इन वेबसाइट. सो उसमें क्वेश्चंस करो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, नियरली separate topic only. Nearly 50 to 60 questions are there. Until unless you do that one, then only you will get a confidence. Otherwise, एक दो क्वेश्चन करने से नहीं होगा. अगेन टेस्ट में कैसे लिखा बोलते तो नहीं सर अच्छा नहीं लिखा ऐसे बोलेगा. सो ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन दिस में. अगेन आपको टाइम नहीं मिलेगा मालूम है. आगे जाने के बाद यू नॉट हैव टाइम. इवन सेकंड ईयर में सेकंड ईयर पढ़ना बिजी हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में मिस हो जाएगा. बस फिर लर्न. ट्राई करेंगे. सबका भी हो गया कृष्णा. या ट्राई करो कृष्णा. रिंग, रिंग सेंटर ऑफ मास. MR square. ओके आप बोलो प्रणव. बोलो. मुझे सॉलिड सिलेंडर चाहिए, टॉप सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला. Cylinder. हाँ सिलेंडर So सॉलिड from वाला. there, like is the axis passing through the center? हाँ यस आई दिस आई वांट. MR square by 2. MR स्क्वायर बाय 2. ओके आप बोलो मानो. मुझे डिस्क चाहिए MR सेंटर square by ऑफ. ओके आप बोलो कृष्णा. मुझे शेल चाहिए हॉलो स्फीयर का. 2 by 3 MR square. ओके एंड सॉलिड स्फीयर का. 2 by 5 MR square. ओके एंड इसका ट्रायंगल का बोलो प्रणव. MH square by 6. यस एंड रेक्टेंगल का कृष्णा. रेक्टेंगल लेंथ वाइज इज. Lengthwise is ML square by 12. Breadthwise is MD square by 12. चलो खलास खत्म वही है. ड्रॉड का भी आता है ना आपको 12 वाला. चलो नाउ विल गो फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जनरल एक्सिस ऑफ रोटेशन. जनरल एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब we know only center of mass से पास होने वाला, but we don't know some other axis का we don't know. उस टाइम में we have to apply theorems. Two theorems are there: perpendicular axis theorem, parallel axis theorem. Very important theorems. Okay. Now we'll do the उसका theorems का करने वाला है. चलो. So first one is perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. Sir, what's the big Moment of inertia about the general axis of rotation. Okay, sir. Okay. So usme first one is perpendicular axis theorem. By seeing you will understand when to apply perpendicular axis, when to apply parallel axis, you will understand. Okay. So first we'll go for perpendicular axis theorem. Statement है इसका क्या है we'll see. See, perpendicular axis theorem is useful for 2D bodies. Two-dimensional bodies only we should apply this perpendicular axis theorem. We can't apply for three-dimensional. Okay. And laminar bodies also. Laminar means thickness is 0. Laminar bodies. Matlab, or we can say laminar plates also. Plates में thickness is 0 वाला भी we can apply perpendicular axis theorem happily. Okay. तो इसका statement क्या है? We will write the statement. Then we'll write the formula. देखो छोटा statement है ना. So what is the statement says? The moment of inertia of a plane lamina about axis perpendicular to the plane is equal to the sum of the moment of inertia about any mutually perpendicular axis in that own plane intersecting each other at a point at which they are perpendicular. First लिखो, I explain. Suppose मान लो, first लिखो, I'll explain.
So suppose मान लो there is one laminar body. We have three axes. Okay, one is x-axis, y-axis, and z-axis. Here, one thing you have to understand is x and y should be in the same plane में रहने का, body के अंदर में रहने का. Okay, x and y should be, and z-axis will be always perpendicular to the plane. Z-axis is equal to perpendicular to plane. That means here you should understand that x, y, z are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. That's first condition. Second condition में x and y axis should be in the plane of the body. दोनों axis should be in the plane only, not perpendicular. Okay, मतलब plane में रहने का. और देखो x and y axis should be in the plane of a body. And z should be always perpendicular to plane. Z should be always perpendicular to the plane. In that condition में we can apply perpendicular axis theorem. The formula is Iz is equal to Ix plus Iy. Ix is what? Moment of inertia along x direction, moment of inertia in y direction, and moment of inertia in z direction. So क्या लेने का? Whenever you are applying perpendicular axis theorem, आपको क्या करेंगे? दो plane में लेने का. दो axis should be in the same plane and all three should be perpendicular. Then only the perpendicular plane का moment of inertia is always equal to sum of the moment of inertia which are in the same plane. Okay. And दूसरा आपको important thing है, suppose मान लो एक डिस्क है. I am taking two x वाला moment of inertia and y वाला moment of inertia. Suppose y का x का, दोनों moment of inertia will be same. दोनों moment of inertia will be same because देखो this y वाला is dividing two equal parts and x वाला is dividing into two equal parts. That's why दोनों moment of inertia will be same always. Whenever you're taking the two planes perpendicular, उसका moment of inertia will be same. Okay, somewhere because y-axis is dividing this disk into two parts. Similarly, x-axis is dividing the disk into two parts. So moment of inertia about y and x is same always. कभी भी. Okay. So what is the formula? Perpendicular axis theorem. Name itself indicating perpendicular means आपको one axis should be perpendicular. Okay. क्यों ईशा डिस्टर्ब करे क्या? Okay. It was my dad. Okay. चलो. Iz is equal to Ix plus Iy is a formula. Okay. Understood, Mano? Yeah, sir. Yes. So इसका कैसा अप्लाई करेंगे? We will see. Okay. Suppose मान लो, चलो एक क्वेश्चन करेंगे समझ में. करो. Calculate the moment of inertia of the ring. First one is ring है, of mass m radius r about the axis coinciding with the diameter of the ring. I want the moment of inertia about the diameter of this ring. इसका moment of inertia find करो. Diameter के along. We know only one ring वाला, center of mass से पास होने वाला. Okay. So आपको क्या कैसे करने का? How to tackle इस type of questions का? पहले आप दो axis should be taken in the same plane. Okay. So I am taking one is this one, and perpendicularly I am taking one more. This is x and y, right? And you know already x ka moment of inertia, y ka moment of inertia is same, and z axis is perpendicular, which is passing to center of mass. So what is the formula? Iz is equal to Ix plus Iy. Okay. Since both moment of inertia is same, Iz is equal to I plus I is 2i. So mr square by 2. So Iz is already you know ring ka mr square and 2 का नीचे पे को always I. This is a moment of inertia about the diameter. We know center of mass से pass होने वाला axis, but we don't know diameter general axis वाला, other than center of mass वाला
इसका. So how to apply? Iz is equal to Ix plus Iy. Always diameter का कैसे आएगा मालूम है? Center of mass से by 2 आएगा always. Diameter वाला कभी भी by 2 आएगा. Okay. Now इसका करो. A disc coinciding with the diameter. I want this. m square by 4. हाँ समझ आ रहा है? मानो इसका आंसर कितना होगा? Iz is Yeah, equal yeah, mass square by Ix plus Iy. yeah. And Wait, yeah, 2I is equal to moment of inertia about the center of mass ka. mass You square by know, 2. Yeah. mr square by 2. Therefore, moment of inertia is mr square by 4. Sir, how That's is why Ix equal to Iy? these shapes are important. I told you center of mass ka values are important. Otherwise, no रुक जाएगा. इसका value नहीं मालूम तो we can't do anything, right? Sir, Further how we is can't go. Ix equal to Iy? See, that's why I told you. देखो, this is a disk मान लो. Okay, this is x-axis. Now this axis is dividing the disk into two equal halves. Right? That means इसका moment of inertia is I मान लो. Similarly, y direction में also dividing the disk into two equal halves. So इसका moment of inertia, इसका moment of inertia will be symmetrical, easy, same है. That's why both will be same always, कभी भी diameter wise में. Okay? So then doesn't z axis also divide into two equal halves? Z axis क्या center of mass है? किधर divide कर रहा है? It is like this. It is passing through the center of mass. Okay? इस axis का center of mass already we know, right? mr square by 2 वाला disk वाला. So we are using that one. mr square by 2 equal to I. Okay. So one formula we learned, Iz is equal to Ix plus Iy is a formula we learned. Okay. चलो इसे करो. पहला option. Find the moment of inertia of a rectangular plate as shown in figure. They given I1 they given as mb square by 12. I1 they given, मतलब I1 is given to you. And I3 also given to you. I3 is the center of mass से पास होने वाला. M into A square by B square by 12. He's asking what is I2. I2 वाला means this one. कौन सा किसको कट कर रहा है? A लेंथ को कट कर रहा है. A को कट कर रहा है. A को कट कर. m square by 12. देखिए and apply the this one and solve. So want to be m square by 6. देखेंगे. रुक गया. हाँ इसका करो कृष्ण. इस rectangular plate है. They given two moment of inertia directly. They're telling to find I2. I2 is this one. Diameter wise along the length A को कट कर रहा है. So I2 is which one? I2 is this one along the diameter wala. I2 this one. We're supposed to find I2. I2 we have to find. They given I1, I3 is given to you. I1 is this one. It's And m square by 12, sir. It's m square by 12. I did a calculation mistake. okay देखेंगे उसको भी वो देख के आंसर बोलेंगे. Use the formula and solve. Iz is equal to Ix plus Iy. I3 is the center of mass perpendicular wala. मतलब Iz is nothing but this one. So m square by 12. So both option ना? Yes हाँ. correct. आया सबको? Yes. By perpendicular axis theorem, Iz is equal to Ix plus Iy. So from this I2 is equal to how much? I3 minus I1, right? सब्स्टिट्यूट करो आ जाएगा. रेक्टेंगल है ना? चलो नेक्स्ट इसको बोलो.
Calculate the moment of inertia of a semicircle about this axis. Sir, m L square by 2 pi square. Option number? 4. Sir, over here, will the L be the diameter? L is the no uniform length है उसका पूरा length है. Sir, is the length the same as pi r, like the circumference? Like हाँ, circumference is L is nothing but pi r. Yeah, then okay. So then 1 second. Yeah. 1 second. R is equals to what? L by pi m into. I want moment of inertia about this axis. Sir, ml square by 2 pi square. ml square by 2 pi square. Why? क्या किया? Tell me. Sir, you get L is equals to pi r, so R is L by pi. For Okay. for this, the moment of inertia is mr square by 2. So m into L square by pi square by 2. So ml square by 2 pi square. mr square by 2. Yeah. Okay. Why mr square by 2? Sir, because it's half. There's this thing for like half a ring. It will be ये m मेन r क्वेश्चन square. पक्का ना? So it's a semicircle, sir. So it acts like a 2D disk. Disk is generally 3D, but the semicircle like a 2D disk. So the moment of inertia will be the same only, right? Okay, I'm telling it is a 2021 question. Pakka right? Wrong? Sir, 100% confirm. It's D only. आप प्रणव? Sir, D. D. Okay. Pakka, Krisha, you want to change anything? No. So answer is wrong. I told you ml square by 2 pi square. Okay, right. See, why we can't use center of mass? Tell me. इसमें center of mass also we can use, right? इस सेमी सर्किल का center of mass you know, right? कितना याद है center of mass का? Sir, it will be at the center now, sir. हाँ, center. इसका कितना रहेगा? 2r by pi. हाँ, so why can't we use here center of mass का concept? mr square, right? Whenever this Sir, particle you it can won't be treat. 2r by pi, sir. हाँ? Sir, it will be at the center on x dash. అవును, सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा? सेंटर बोल तो कितना है फ्रॉम दिस Sir, सेंटर? that's not a semicircle. नॉट सेमी सर्किल. दिस सेमी सर्किल का मास है यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ बेंड इन द शेप ऑफ ए सेमी सर्किल, राइट? सेमी सर्किल का मास ओनली m, right? Sir, for semicircle, shouldn't it be like a complete semicircle from the bottom also? This is imaginary axis. This is imaginary axis. Okay, इसके अबाउट चाहिए सेमी सर्किल का इमेजिनरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. सी, इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट वी कांट यूज. व्हाई? आई टोल्ड यू बिफोर, पोटेंशियल एनर्जी में वी आर यूजिंग द सेंटर ऑफ मास बिकॉज आई टोल्ड यू mgh, राइट? डिस्टेंस पावर 1 रहेगा, दैट टू डायरेक्ट रिलेशन रहने का, देन ओनली वी कैन अप्लाई सेंटर ऑफ मास. हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या है? mr स्क्वायर. ए डिस्टेंस पावर 2 है, we can't apply center of mass concepts here in the moment of inertia. Okay, इसमें समझ में आ रहा है? थोड़ा स्क्वायर है, so power 1 वाला कभी भी you can use. That's why we are going for. See, आपको ये कर सकते, देखो, you know already r is equal to l by pi you got, right? देखो, we'll check once. ये I can this इसका मास, सेमी सर्किल का मास is how much? m, right? सेमी सर्किल का मास is m. देखो, I'll give, देखो, a semicircle का mass is m. I can complete the circle. I can make the circle ring, right? इसका mass is how much? Total circle का mass is how much? 2m. 2m, right? So what is the moment of inertia of the ring? mr square, right? mr square. So 2m into r square. R square. Okay, but that is what axis you're talking about, the diameter, right? मतलब आपको this is diameter, right? Not about center of mass का नहीं है. Diameter means by 2 आएगा ना? So कितना होगा?
mr square ही होगा. So that's why answer is you got as this one, ml square by 2 pi square आया. Okay, ऐसा सर्किल करके भी कर सकते हैं. Okay, समझ में आ रहा है? This is a diameter. Diameter is not mr square by 2. Okay, so that's why 2 mr square by 2 2 together cancel, mr square बोल के आया, and r के जगह में you put this one, we got right, mr square by 2, r के जगह में l by pi you got, and substitute किया तो we'll get this one, mr square by 2 pi square. Okay, understood? So next we'll go for parallel axis theorem. Parallel axis theorem. Now tell me, parallel axis theorem we can apply to which bodies? Parallel axis theorem we can apply. Tell me, parallel axis theorem we can apply in which bodies? Sir, for all bodies. One dimension, Well, 2 dimension, 3 when dimension. two axes, one is passing through center of mass, other one is passing parallel to it. Then we can apply parallel axis theorem. And उसका relationship क्या है? उसका statement लिखो. Moment of inertia about any axis is equal to the moment of inertia about the parallel axis passing to the center of mass plus the product of mass of the body and square of the distance between the two parallel axes. Suppose मान लो you have any body, center of mass से pass होने वाला axis आपको मालूम है. Okay, I want the moment of inertia about this general axis. This one I want, moment of inertia that is passing exactly parallel and distance separation by distance d. So then what is the formula for moment of inertia about that axis is I center of mass plus md square is the formula. M is the mass of the complete body. Mass of the complete body. Okay, so formula is moment of inertia is equal to I center of mass plus md square. These two formula आ गए तो so many questions you can solve. Copy down nicely. नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा. विल डू क्वेश्चंस आल्सो. I'll go for a torque next में, मतलब after finishing I'll go for torque. Torque में only all kinematics dynamics पूरा उसी में आ जाएगा. पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने समय एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से कंपलसरी पास होने का, देन ओनली वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जनरल एक्सिस. आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर इज अ फॉर्मूला. तो बुक्स में दे विल गिव इन आर बोल के देगा, बट डी डी का विल लर्न. ओके, एम डी स्क्वायर. M is the mass of the complete mass of the body का, and d is the distance between these two parallel axes. Next. चलो, now इसका आपको समझ में आने का. सपोज मान लो, ओके चलो, सपोज मान लो I'll take one rod. We know already this one, length L. I want moment of inertia about this general axis. मान लो we don't know this moment of inertia. We already know ml square by 3. कैसा है देखेंगे, apply parallel axis theorem. Moment of inertia about this axis.
सो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस यू नो राइट, इज आई डैश मान लो। आई सेंटर ऑफ मास कितना है, ठीक है आई मान लो, आई सेंटर ऑफ मास इज हाउ मच, एम एल स्क्वेयर बाय 12 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ मच, एल बाय 2। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फॉर्मूला क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वेयर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास इज एम एल स्क्वेयर बाय 12 plus m d square is nothing but L by 2 whole square is L square by 4. So LCM is 12, 3 ml square plus ml square, 4 ml square by 12, that is ml square by 3, which we already know. देखो end से पास होने वाला axis. Okay, so any आपको center of mass का axis वाला only we should by heart. Remaining everything we can get by parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. Some questions में आपको दोनों अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों अप्लाई करना पड़ेगा, पैरेलल करके परपेंडिकुलर करके दोनों सब कुछ एक एक्सिस में लेके आके देन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके चलो अंडरस्टूड राइट ये वाला, चलो ना करो फॉर्मूला से करो, इफ यू नो डायरेक्ट आल्सो नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला से करो। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m and radius r about the axis which is tangent to the disk. Okay, so one sphere is there, one disk is there. Okay, one sphere है disk है, मान लो आई वांट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टैंजेंट चाहिए, एक स्फीयर का एक डिस्क का, दोनों डिस्क लिख दिया बट जनरली ये वाला, हाँ दोनों डिस्क ओनली। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम रेडियस अबाउट द एक्सिस व्हिच इज टैंजेंट टू द डिस्क, द टैंजेंट टू द प्लेन एंड अदर वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ओके सी दोनों डिस्क ओनली, दोनों डिस्क ओनली, वन इज ऐसे जा रहा है, वन इज ऐसा में ऐसे कॉर्नर में जा रहा है, आई वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का। So sir, for one part you have to use parallel and for the second one you have to use perpendicular axis. देखो फर्स्ट वन देखो, ये सेंटर ऑफ मास से ये पैरेलल है मालूम है ना, आ रहा है, व्हाई हियर परपेंडिकुलर, हियर आल्सो देखो दिस इज अ डिस्क राइट, ये टैंजेंट इज पासिंग परपेंडिकुलर टू दिस वन एंड सेंटर ऑफ मास दोनों पैरेलल है ना, दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी यूज। So for the perpendicular I got 3mr square by 2. फर्स्ट वन आंसर कितना है, So one second. Sir, both will be the same. both will be same, Yeah, 3mr square by 2. 3mr square by 2, no wrong, first one wrong। देखो ये वाला डायमीटर वाला यू यूज, डायमीटर वाला Oh कितना my, होगा, yeah, then it's by 2 right, then it's 5mr square by 4. हाँ 5mr square by 4। so diameter wala you know this is the moment of inertia about this axis is I center of mass, so I is equal to I center of mass plus m d square, so I center of mass is m r square by 2 by 2 right, so by 4 plus m r square, so it is 5 m r square by 4 first case आया समझ में। So you should be very careful whether it's the diameter center of mass से पास होने वाला, when you take radius? किसका, So how do you know when you take diameter and radius? देखो इस दोनों को एक्सिस का डिस्टेंस इज हाउ मच, R. हाँ डायमीटर नहीं है, सो दोनों एक्सिस का बीच में कितना डिस्टेंस है वो डालो, जैसे डायमीटर होने दो रेडियस होने दो। ओके सो दोनों को पैरेलल का डिस्टेंस ओनली शुड टेक, डी इज द डिस्टेंस एंड इसका देखो दिस एक्सिस अगेन द डिस्टेंस इज आर ओनली एंड ये वाला मालूम है आपको, से एम आर स्क्वायर बाई 2 बोल के डिस्क का, सो प्लस एम आर स्क्वायर, सो कितना होगा, सेकंड आंसर इज 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। So let's say I can understand again for the 5, how do you got that as mr square by 4? फर्स्ट That's वन because of diameter. For the first one, we took फर्स्ट वन diameter. में सी याद रखो, फर्स्ट वन में डायमीटर आई वांट टू डिराइव राइट, देखो इफ आई वांट टू डिराइव डायमीटर I told you shortcut also, but how to do the thing, देखो this is along the axis right, one more axis I am putting, I call this as y, this is x and z axis is this one right, if I use the perpendicular axis theorem, iz is equal to
ix plus iy. Yeah. And I told you y and x ka moment of inertia is same, right? Yeah. And iz is nothing but what is the moment of inertia? Mr square by M 2 R square by 2. is equal to y. I is Oh my equal god. to. Yeah, yeah, I got it. You have to understand this one is whenever diameter is given, जो center of mass से by 2 करने का, you get mr square by 4. तो मेरा क्वेश्चन शुड़ा. ओके चलो. तो बहुत पेशेंस से करना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाएगा प्रॉब्लम. देखते हैं. We will do. देखो two uniform solid spheres are there of mass m1 and m2 and radius is r1, radius is r2 and respectively are connected with a uniform rod of length of mass m. A rod का भी length है, mass m, length l है, total length is l. Okay. Find the moment of inertia of the system about the axis perpendicular to rod and passing through a distance a from the center of mass. मुझे center of mass से a distance से pass होने वाला axis में x x dash. I want the moment of inertia about this axis. Okay. Here आपको three masses are there. Three masses are there. One is rod का mass है. One is sphere का mass, solid sphere का mass है. Okay. I want moment of inertia about this axis. Okay. Distances देखो always from here to here. Can you tell me what is the distance between these two? Center of mass से distance चाहिए इधर से. तो center of mass से चाहिए. Total length is L. Total length का rod is L. You tell me center of mass से L by 2 ये वाला and इधर भी L by 2. Right? हाँ. ये डिस्टेंस कैसा आएगा? सेंटर से चाहिए, सेंटर से डिस्टेंस चाहिए. देखो दिस इज r1. Sir, are Okay. they hollow spheres or are they? Solid spheres. Oh, Take it all right. okay, okay. हाँ. Now what will be the distance of this axis? Tell me first distance find करो, then easy हो जाएगा. ये डिस्टेंस कितना है? r1. देखो r1 चाहिए प्लस l by 2, टोटल l by 2 माइनस a. इज द डिस्टेंस. तो मैं ये समझ में आया मानो? Yeah. Sir, isn't that distance L by 4? कौन सा? नो बिकॉज दिस इज नॉट, इसका सेंटर नहीं है. he did not told anything. He told from this से a distance दूर में this axis is there. Yeah, sir. Won't A be L by 4 only? a भी l by 4. Why? So if the whole, if the from the point from the radius of the circle till cm of rod, if it's L by 2, can't A be L by 4? He told ना क्वेश्चन में. Oh. He did not told. मतलब इसका आधा पार्ट नहीं बोला. He's like, whenever he's showing, मतलब he can put here also, here also, here also, and somewhere also. A distance is not compulsory that it is center से आएगा. So a distance is r1 plus a l by 2 minus a. And similarly इसका डिस्टेंस बोलो, इधर से इस एक्सिस से सेंटर तक डिस्टेंस बोलो. ये पूरा काम आने वाला है अभी. हाँ ये डिस्टेंस बोल सकते हो कितना आएगा? r2. देखो इधर से इधर तक r2 प्लस l by 2 प्लस a इज द डिस्टेंस. r2 plus l by 2 plus a is the distance from center to this axis. and आपको ये एक्सिस का सेंटर ऑफ मास का मालूम है. ओके चलो करो. नो पूरा सॉल्व मत करो बट इक्वेशन बोलो डायरेक्टली. ओके देखो फर्स्ट स्फीयर का कैलकुलेट करेंगे. टेल मी मानो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास का वाला सॉलिड स्फीयर में? M R square by 4. नो सॉलिड स्फीयर. The sphere. So 2 by 5. 2 by 5 M R square. हाँ 5 बोला ना. 2 by 5. सो इसका 2 by 5 mr square, right? This is center of mass से पास होने वाला. But I want moment of inertia about this axis, right? So they are parallel to each other. Parallel axis theorem apply करो. So what is उसका first sphere का moment of inertia about x x dash is equal to moment I center of mass plus md square, right? I center of mass कितना है? 2 by 5 mr square m1 m1 r1 square plus m d square. D square is how much? इसका distance square is this one, right? So r1 plus
L/2 minus a whole square. This is first pair का गया, आ गया first pair का. Sir, We are using parallax theorem. इस axis का चाहिए. I am using I center of mass plus md square. Distance, that's why I found distance here. md square. आ गया. Now second sphere का find करो, देखते हैं. Second sphere का. sir, 2 by 5 m2 r2 square plus m2 a plus l/2 plus r2 whole square. Plus a whole square. या है ना? आ Yeah. गया? हाँ. Yeah, Now yeah, yeah. इसका rod का बोलो. Center of M mass of r the rod, you square know. by 3 plus m a square. ml square by 3 या. M r square m l square by 3 plus m a square. नहीं, wrong. So is it ml square by Then 12? ml square by 3 plus हाँ, ml square by 12 2. या कॉर्नर से नहीं कर रहे ml square by 12. हैं. हाँ, सो ml square by 12 प्लस ma square, तीनों को ऐड कर, दैट्स इट, कुछ नहीं. वैल्यूज दिया तो इट इज इजी. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. कर सकते ना? इसका करो. JEE मेंस क्वेश्चन, I'll give options. Sir, over here, what do you get in two variables, A and B? Yeah. So when you get the answer in like A and B form, यस, A and B फॉर्मेट में आएगा. so is the D like the question is the D B by root 2. मतलब ये डिस्टेंस दिया, दैट्स इट. योर विश, दैट डिस्टेंस क्या ले सकते हो, देख. b√2, b by root 2, या. Sir, solid spheres only, no? हाँ, सॉलिड स्फीयर. Okay. So I got the diagonal of the square as 8 by 5 ma square plus 2 mb square. 8 by 5 ma square plus Plus 2 mb square. नॉट 2 mb square. mb square आएगा बिकॉज 2 को बाहर ले लिया ना, मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा. So no, sir, you'll get 2 by 5 ma square plus mb square by 2. Oh my god, oh never mind, never mind. हाँ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, mb square आएगा. 8 by 5 ma square plus mb square आएगा. Sir, from diagonal it's 8 by 5 ma square plus mb square, and from side it is 8 by 5 ma square plus 2 mb square. फिर से बोलो. Sir, from side it's 8 by 5 ma square plus 2 mb square.
Yes. And diagonal is 8 by 5 mu square plus mb square. Yes. आपको आ So गया? for any side, 1 second. So for any side, I got MV. so for any square of side, the distance and the breadth will be the same, right? Second one will be 2m by 5 bracket open. So your 4 video is stuck. yeah. Can you able to hear now? So but the video is 1 second. I'll rejoin. Video can able to see this, Krisha? Sure, I can't see the screen. Yeah, so I can see the screen. Yeah, now I can. Yeah. So answer bolo. So for the any side of the square, the D and the breadth will be the same, right? The D and B. मतलब when you're applying इसका and इसका, then parallel axis में D is same. इसका B by root 2 and इसका भी B root 2. B by root 2. So now कितना होगा answer? Yeah, 8 by 5 MA square plus 2 MB square for any side. And for that, it's only MB square, right? Calculation mistake. I'm asking second question. Any side of a Yeah, square. 8 by 5 MA square plus 2 MB square. Yes, correct. So where? So for diagonal, I got 2 MB square. First one, you're telling? Yeah. First one is 8 by 5 MA square plus MB square. So I got 8 by 5, but instead of MB square, I'm getting 2 MB. No, something wrong here. These are solid spheres. Calculate the moment of inertia about the diagonals of a square. So shouldn't I find for each sphere and multiply by 4? देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला है, राइट? नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो 2 by 5 mr square plus 2 by 5 mr square दो आएगा. एंड इसका इसके एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला आई एम यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 by 5 mr square प्लस md square, राइट? सो mb by root 2 whole square. आने के बाद into 2 करो, इसका भी आ जाएगा. So if you solve, you will get as 8 by 5 ma square plus m. So the video got stuck again. This answer. Yeah. So understood, right? Till end? Yeah. Yeah. चलो. एक क्वेश्चन करेंगे, निकलेंगे. The moment of inertia of a sphere is 40 kg. Now values are given to you. 40 kg meter square about its diametrical axis. So about diameter they given. Determine the moment of inertia about tangent. So value दे दिया. It's a sphere. Oh yeah, it is. Sphere का value दे दिया. That'll be easy only. 1 second. 2 by 5. So 140. देखेंगे. Sir, I'm getting 300. ऑप्शन नहीं है ना. Sorry, I'm getting 200. 200. मतलब फिफ्थ ऑप्शन है फिर. Yes, sir. देखो इसमें the given moment of inertia with diametrical axis is nothing but this one, right? Center of mass वाला one, right? 40 is given. Moment of inertia I want about this axis. So what is the formula? I x dash is equal to I center of mass plus m d square. D is nothing but r square. Center of mass also you know. And this x center of mass वाला only 40 is given, right? So solve किया तो
you get answer as 140 kg meter square. समझ में आ रहा है? So डायरेक्टली दे दिया ना, so no problem. डायरेक्टली you can use this also, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. Okay, sir. समझ में आया? Yeah.